अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये है एजुकेशनल रिसर्च या फिर रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। और यूनिट नंबर 1 के लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने दो जो है मेन टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए थे, रिसर्च और रिसर्च की क्लासिफिकेशंस। तो आज हम लोग जो हैं ये इसमें जो रिमेनिंग यूनिट 1 के टॉपिक्स थे रहते हुए उनको कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज के उसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, वो है प्रोसीजर या स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड और डिफरेंस बिटवीन मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसीजर या स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। किसी भी एजुकेशनल रिसर्च को एजुकेशन की फील्ड में जब भी आप कोई रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। और वो क्या है कि नंबर 1 है आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आपने एरिया जो है वो एजुकेशन की फील्ड का होगा और उससे रिलेटेड आपने जो है वो उस टाइम पे जो मोस्ट प्रॉबेबली अकरिंग जो है वो प्रॉब्लम होगा, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए और फिर उसकी हाइपोथेसिस बना लेंगे। उसके बाद आपने उसका रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगी, किस मेथड से ही रिसर्च होगी। अब मेथड कौन से हैं वो जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे एजुकेशनल रिसर्च तो वहाँ पे आपको जाके क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। देन आपने डेटा जो है वो उसको कलेक्ट करना है, फिर जो डेटा कलेक्ट है उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है एंड देन फाइनली आपने रिपोर्ट लिखनी है। अब कहने को ये सिर्फ 6 स्टेप्स हैं बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बेसिक जो प्रोसीजर है वो हर एजुकेशनल रिसर्च की जितनी भी आगे टाइप्स पढ़ी हैं उन सब में यही वाले टॉपिक्स बार बार यही स्टेप्स रिपीट होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन। और इसके साथ जो है वो द रिसर्च प्रॉब्लम मे बी समथिंग एन एजेंसी आइडेंटिफाइज एज अ प्रॉब्लम सम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड बाय एजेंसी। दिस एजेंसी में बी यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन आपके पास नंबर 2 पे है फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। अब रिसर्च के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनाने हैं वो क्या है कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होंगे, जो गोल होंगे जो आप रिसर्च में सेट करते हैं। देन रिसर्चर इज क्लियरली मैंशनिंग द थिंग्स दैट यू वांट टू बी फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द रिसर्च टाइटल। Research objectives inform readers about scope and extent of the research. Then hypotheses are the logical statements or guess statements which are done by researcher. अब ये जो है ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। और जो हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन है ये एक डिसाइडिंग जो है ना वो इस वजह से भी है कि मेथड ऑफ रिसर्च और टाइप ऑफ डेटा जो आपने कलेक्ट करना है ना उसके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है ये। देन आपने देख लेना है डिसाइडिंग दी मेथड ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च का मेथड क्या होगा? बहुत सी जो है वो रिसर्च के मेथड्स हैं जिनमें ऑलरेडी मैं बता चुकी थी। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव की बहुत सी टाइप हैं, क्वांटिटेटिव की भी बहुत सी हैं। तो कौन से रिसर्च टाइप में जो है वो रिसर्चर जो है वो कौन सा मेथड चूज़ करना चाह रहा है अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। देन उसके जो मेथड ऑफ रिसर्च है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बनाने, जो कि ऑलरेडी एक स्टेप गुजर चुका है। देन नंबर 4 इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा का कलेक्शन जो है वो बड़ा, ये भी एक वास्ट फील्ड है। इसमें ये है सबसे पहले आप ये कि डेटा की टाइप को देखेंगे। आपकी डेटा जो कलेक्शन है उसकी टाइप क्या है, उसका मेथड कौन सा यूज़ हुआ है।
देन आपने उसको उसके हिसाब से आपने कलेक्ट करना है। अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हो तो यू मस्ट गो थ्रू विद इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट, इस तरह की होंगे। बट इफ़ यू आर गोइंग टू वर्ड्स क्वान्टिटेटिव, आप सर्वेज, क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा रिसर्चर जो है वो किसी भी जगह पे अगर वो बड़ी फील्ड है तो गवर्नमेंट भी जो है वो आप इसमें इन्वॉल्व होगी, और इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशन है तो आप वहाँ से भी डेटा कलेक्ट करोगे। देन इट्स नंबर 5, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आपने एनालाइज करना है, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि आपने उसको अरेंज करना है, उसकी कैलकुलेशंस बनानी है जहाँ जहाँ ज़रूरी है। देन आपने उसको जो है ना उसको कोई फॉर्मेट देना है, वो ग्राफ्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई लाइंस हो सकती हैं, और उसके अलावा फिर आपने उन डेटा को ट्रांसलेट करना है या इंटरप्रेट करना है ताकि उसको हर कोई समझ। अब ये आ गया आपके पास फाइनल, और ये है राइटिंग अ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आपने कैसे लिखनी है, वो ये है कि आपने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के बाद रिसर्चर ने जो है वो फाइनल कंक्लूजन लिखना होता है, यानी रिसर्च का जो कंप्लीट रिज़ल्ट है वो आपने सबके साथ शेयर करता है। रिसर्चर वो बताता है कि हाँ जी मैंने ये प्रॉब्लम लिया, इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, इस अकॉर्डिंग मैंने डेटा को कलेक्ट किया, मैंने यहाँ ये जो है वो टेस्ट अपलोड किए, ये वाले जो है वो मैंने एनालिसिस के लिए ये चीज़ें यूज़ की, और उसके अलावा उसके बाद ये रिज़ल्ट आया। वो जो फाइनल है एंड रिपोर्ट जो है वो थीसिस उसको कहते हैं, जिसमें रिसर्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है। और इसके अलावा ये जो है वो एक समरी होती है आपके सारे काम की, सारी फाइंडिंग्स की, जो थ्रू आउट आपको रिसर्च के प्रोसेस में आपको नज़र आए। ये साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड को सबसे पहले देख लेते हैं। ये यूनिट नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है रिसर्च मेथड्स ऑफ एजुकेशन का, उसका 1.4 पॉइंट है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन। तो सबसे पहले बात करें तो साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर क्वेश्चन। साइंटिफिक मेथड वो प्रोसेस है एक्सपेरिमेंटेशन का जो यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन, फॉर आंसरिंग सम क्वेश्चंस, उनको इन डेप्थ में देखने के लिए थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी प्रोसेस होगा वो जो होल प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व है। अब इसके अगर स्टेप्स की बात कर लें तो उसके 7 बहुत से स्टेप्स हैं, लेकिन जो इनहेंस स्टेप्स हैं वो 7 हैं। सबसे पहले है आपने रिसर्च को अगर देखना है, साइंटिफिक मेथड को रिसर्च में यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपका स्टेप होगा आस्क अ क्वेश्चन। देन आपने रिसर्च परफॉर्म करनी है। नंबर 3 इस्टेब्लिश योर हाइपोथेसिस। Number 4 test your hypothesis by conducting an experiment. Number 5 make an observation. Number 6 analyze the results and draw conclusions. And number 7 present the findings. Now it's time for point number 1, which is ask a question. It's a first step in scientific method, asking a question you want to answer. Then this question will include one of the key starters: how, what, when, why, where, who, or which. Then question you should ask will also be a measurable and answerable through experimentation, and often something that can be measured with a numerical result, although behavioral results are also part of the scientific method. Then number 2, which is perform research. With your questions formulated, conduct preliminary background research to prepare yourself for experimentation. Then you can find information through online searches on your local library depending on the questions you are answering and the nature of the background data. Then you may also find previous studies and experiments that can help with your process of the conclusion.
Now number 3, which is establish your hypothesis. Now hypothesis is an educational guess you can make. Hypothesis and an educated guess that seeks to answer a question that can be systematically tested. Hypothesis should be also include predictions that include measurable things through experimentation and research. Now number 4, which is test your hypothesis by conducting an experiment. Now it's time for testing your hypothesis through experimentation. So first step you can do is you can do your experiment in a way which is quantifiable. You can conduct a test on your prediction, and then you can be able to repeat by another scientist. Then number 5, which is make an observation. It is important part. Assessing your scientific process, ensuring the conditions remain the same throughout all testing measures. You can change any factor in your experiment, keep all other the same to maintain fairness. Then after completing the experiment, repeat it a few more times to ensure the results are accurate. Then analyze the results and draw a conclusion, which is you can take your experiment finding and analyze them to determine if they support your hypothesis. Drawing conclusions mean determining whether you believe would happen, did happen. If it did not happen, you can create a new hypothesis, returning to your 4th step and conduct a new experiment to prove your new theory. But if your hypothesis happening during the experimentation phase, then you have to final step in putting together your finding and presenting them to others. Then your step number 7, which is present your findings. It is the last step, and the method for presenting your findings depends on your scientific position and level. You are entering a project into the science fair. You will likely communicate your findings in a written report, on a display board, or during a presentation at the event. If you are a scientist by profession, you may present your findings in a scientific publication or to your supervisors. 1.5, which is difference between methodology and methods. Now what is methodology? Methodology is referring something, strategy and rationale of your research project. It involves studying the methods used in your field and the theories or principles behind them in order to develop an approach that matches your objectives. But if we discuss methods, these are the specific tools and procedures you use to collect and analyze data, like experiments, surveys and statistical tests. So in shorter, if we discuss that scientific papers where the aim is to report the findings of a specific study, you might simply describe what you did in a method section. And in longer or more complex research projects such as a thesis or dissertation, you will probably include a methodology section where you explain your approach to answering the research question and cite relevant sources to support your choice of methods. So this is our unit number 1, which is now completed. Hope you guys like this lecture. If you can't, you can ask me a questions or mail me. I have given in description box. We'll meet you in next lecture. Till then, bye bye.